व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही फन फिलिंग टॉपिक है। टुडे वी आर लर्निंग वॉल्स। यस फ्रेंड्स, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। 26 लेटर्स इंग्लिश में होते हैं बेसिकली, और उसमें से एवरीबडी नोज 5 आर द वॉल्स। बट ऑब्वियसली जब बच्चे आपके पास आते हैं तो उनको तो ये बात नहीं पता होती कि व्हाट आर वॉल्स एंड हाउ वी डिस्क्रिमिनेट वॉल्स विद द कॉन्सोनेंट्स, व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स, व्हाट आर वॉल्स, हाउ मेनी वॉल्स। सो ये सारी चीज़ें हमें उनको इंट्रोड्यूस करवानी होती हैं। सो नाउ you are going to introduce vowels, not just like a regular lesson। आप बिल्कुल उसी तरह जैसे डेली बेसिस पे रेगुलर बच्चों को लेसन्स देते हैं, नॉर्मल लेसन्स, फीके लेसन्स, डल लेसन्स, नॉट एट ऑल। सो प्लीज़ अपने लेसन्स में जान डालिए, फ़न डालिए, इन्जॉयमेंट डालिए, कलर डालिए और उनको ब्राइट कीजिए ताकि बच्चे उसको याद रख सकें। और ऑलवेज़ रिमेंबर, जिस लेसन को आप फ़न फिलिंग एक्टिविटीज़ के साथ करवाएंगे बच्चे उसको सबसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए याद रखेंगे और उसको उस वक्त भी वो सबसे ज़्यादा ग्रास्प करेंगे, बहुत जल्दी पिक करेंगे। आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी, जो कुछ भी आप उनको लर्न करवा रहे होंगे वो बहुत जल्दी पिक करेंगे। सो ऑब्वियसली उनके बच्चों का जो कंसंट्रेशन स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट होता है। और यानी कि आप जब उनको फॉर एग्ज़ाम्पल सर्कल टाइम में भी जब हम उन्हें बिठाते हैं तो उन्हें हम सेटल करते करते ही आधा घंटा लगा देते हैं, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में सर्कल टाइम, हाउ टू टेक एन इफ़ेक्टिव सर्कल टाइम, उस पर टिप्स दूंगी। लेकिन यहाँ अभी हम बात कर लेते हैं कि लेसन्स शुड ऑलवेज़ बी वेरी वेरी फन फिलिंग। मेरा ये मानना है लेसन्स में अगर ज़रा सा भी फ़न ना हो, बच्चे बिल्कुल डल और स्ट्रिक्टनेस के साथ लेसन ले रहे हो तो बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल एंजॉय नहीं करते। Now here you can see the 26 letters in English। So सबसे पहले तो आपको बच्चों को बोर्ड पे लाइक दिस, या आपके पास फ्लैश कार्ड्स हैं तो गुड, बट अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स नहीं हैं, यू हैव अ वाइट बोर्ड इन द क्लास। घर पे अगर आपके पास, आप घर पे करवा रहे हैं, मदर हैं और घर पे अगर आपके पास इस तरह का बोर्ड है, दैट्स गुड। आप मार्कर से उनको सारे लेटर्स पहले लिख के दिखाएंगी एंड देन सारे लेटर्स पहले बच्चा रीड करेगा। यहाँ आप उनको साउंड्स भी बताएंगे, लेटर का साउंड भी होगा एंड लेटर का नेम भी। Here you will tell them the letter name also and the letter sound also. Example, this is A. The letter name is A and the letter sound is A. A. This is B. The name of the letter is B and the sound of the letter is B. B. Just like this. In this way you will go through all the letter names and the letter sounds. Here you are going to give them the letter names as well। अब उनको लेटर नेम से भी इस लेवल पर फेमिलियर करवाते जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताना है हमें। शॉर्ट वॉल्स एंड लॉन्ग वॉल्स साउंड्स हमें आगे चल के बतानी होंगी, तो इसलिए इस स्टेज पे हम उन्हें लेटर नेम, लेटर साउंड दोनों चीज़ें एक साथ बताते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छी टिप है मेरे पास, व्हेन यू आर टेलिंग देम द लेटर नेम एंड द लेटर साउंड, दैट वन लेटर इज़ हैविंग द नेम एंड द साउंड। इसको आप लिंक कर सकती हैं इस चीज़ से कि आप अपनी क्लास में या अगर आपके घर में हैं बच्चे, उनको सर्कल में बिठा के उनसे पूछेंगे वन बाय वन, व्हाट इज़ योर नेम? द चाइल्ड विल से माई नेम इज़ सारा। ओके, what is your sound? Then the child will say something, ooh, anything। Then if you can ask, it can be a great activity। आप बच्चे से कह सकते हैं कि okay now we want to hear your sound। Then obviously कुछ ना कुछ वो बोलेगा, कुछ ना कुछ वो कहेगा, oh your sound is very beautiful। इस तरह से हम इस चीज़ को अब बच्चों के साथ हम लिंक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बच्चा, व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट इज़ योर साउंड? द नेम ऑफ द चाइल्ड इज अली। व्हाट इज़ योर नेम? आई एम अली। ओके, हिज नेम इज़ अली, लाइक दिस। सो
After that, starting, you can say the starter. After that starter, we can come on the letters. Okay, this letter's name is A. Sorry, this letter's name is A. And the sound of this letter is, सब बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, A. तो सब बच्चे loudly in one voice कहेंगे. Then B, B, C, K, D, D. I'm just giving you in a short way. E, A, F, F, E का हमेशा याद रखिए. If you forget, it's very easy, भूलना नहीं है आपने. ई को जब हम साउंड में बोलते हैं तो अक्सर लोग ए आ ऊ कर देते हैं. इसकी जो असल साउंड है वो एलिफेंट, जब आप बोलते हैं एलिफेंट, एलिफेंट, ए, वो साउंड इसकी है. ए, एलिफेंट, ए, एग, लाइक दिस. तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू फॉरगेट्स ई की साउंड अगर आप भूल जाएं, और गलत बोलने से बेहतर है कि आप एलिफेंट या एग याद कर लें. उसकी जो इनिशियल साउंड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी ई की साउंड होती है, ई की. देन एफ. ओके, नाउ लेट्स कम टू जी. ग, ग, एच, आई, ई, आई, ई, इंक पॉट, ई, इंक पॉट, ई, इंक पॉट, लाइक दिस. j, 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 k, k. This one is k and this one is just k, not k. इसको हम k कहते हैं and this is not k, this is k, only k, little voice of k. Then next is letter name L and the sound is L, not ill. It's not ill, it's L. First you have to put your tongue up at the back of your upper teeth, ऊपर वाले दांतों के पीछे, and then say L. This is M and the sound is, the sound of M is and this is N and the sound is This is O and the sound is O, O. This is P and the sound is P, P. This is Q and the sound is Qu, Qu. This is R and the sound is R, R. This is S and the sound is S, S, S. This is T and the sound is T, T. This is U and the sound is A, A. This is V and the sound is W, W. This is W and the sound is U. Sorry, this is W and the sound is W, W. V का W and W का W, W, W. X sound is X, X. Y sound is Y, Y. And Z sound is Z, Z, not Z, Z. Okay, now let's come to the main topic, how we will introduce the vowels. ओके व्यूअर्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने एक कार्डबोर्ड हाउस बनाया है, बहुत ही क्यूट सा पेंट करके इसको, और इसके ऊपर पेस्टल से मैंने विंडोज़ ड्रॉ की हैं. यू कैन सी देयर आर 5 विंडोज़ ऑल टुगेदर एंड 1 डोर. सो उस डोर में से हम देखते हैं कि क्या होने वाला है इस हाउस के साथ. ये जो 5 विंडोज़ आप देख रहे हैं ये इंटरलिंक करती हैं उन 5 वॉल्स से जिनको हमने बाकी लेटर्स से अलग करना है, और बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देना है कि वाई दे आर सेपरेट, वाई दे आर कॉल्ड वॉल्स, ओनली दीज 5 वाई दे आर वॉल्स. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आज जिस तरह मैं आपको दिखाऊंगी आप वो देखिए, एंड आई होप यू विल लाइक इट. ओके, नाउ यू कैन सी दैट देयर इज़ अ वॉल हाउस. नाउ दिस वॉल हाउस इज़ गोइंग टू टॉक टू द चिल्ड्रन. ये वॉल हाउस बच्चों से बात करेगा. हेलो, आई एम द वॉल हाउस and I have how many windows inside?
1, 2, this one is 3, 4, and the last one is 5. 5 windows this house have. It means 5 rooms. Wow. And you know what the house is saying? Now the house will speak up. Hello friends, I am the vowel house and I want some vowels to come inside. So the house, now the teacher will tell the children, so the house is having 5 rooms. How many rooms? 5 rooms. So now what the house is talking about? What are vowels and how the vowels will go inside the house? Let's see. One day the 26 letters were passing by the vowel house. So they stayed up here. So the vowel house told them, hey letters, I want the vowels from you. Please give me the vowels. So the letter said, what? What are you talking about? The house said, I have 5 rooms in myself and I want to keep the vowels inside. I have just 5 rooms. Now what we should do? The house is saying that the house is having only 5 rooms. So it means there is the place only for 5 vowels, yani ki 5 letters. So which letters will go in the house? Suddenly all the letters said, we all wanted to come inside. We all wanted to come inside. And they rushed towards the house. But luckily only few of them successfully went in the house. Oh, all the letters are saying, I want to go, I want to go. But the house was saying, no, no, I can keep only the letters. But the house said that I can only keep 5 letters. And all the letters were crying. We wanted to come in. But what happened? 5 of them jumped in the house, one by one. And A just took this room. And then E took this room. And then I took this room. O took this room. And you took this room. Oh my God, wow. That's such a nice story. So all the letters took 5 rooms, 1 room for each letter, for each vowel. And then the rest of the letters became sad. Oh, it's very sad because इनके पास अंदर जाने के लिए room नहीं है. And the house is saying, okay, I don't have more space. Oh, now what to do? House said, sorry letters, I have to say you people bye bye. Oh, these all letters became so sad and they just went away. So the rest of the letters went away. वो लोग चले गए. और which letters were left? A, E, I, O and U. So from that day these 5 letters became a family because they are living in one house. This is a vowel house and this house is only for the vowels. And that's why these 5 letters became vowels. So when they started living in one house, they became a family. And then we have a song also. I have made my own song for the vowel family. छोटा सा एक song मैंने भी बनाया था. वैसे तो you can find a lot of songs related to vowels. Different songs होते हैं, but मैंने जो अपना song बनाया था vowel family का वो कुछ इस तरह से है कि A E I O U, A E I O U,
A-E-I-O-U, vowel family, vowel family, and the children clap twice like this. A-E-I-O-U, 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 vowel family, vowel family, like this. So this was the song, and this was the basic introduction of the basic. It's a basic introduction of the vowels, and then this is the first step, and then afterwards we will introduce in consonants as well, that what are the consonants, and then उनका basic क्या role होता है, वॉल्स का बेसिक क्या रोल होता है, और कॉन्सोनेंट्स का क्या होता है. तो इसके बारे में हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपको कमिंग वीडियो में, पहले तो मैं आपको सर्कल टाइम का दूंगी, देन उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह कॉन्सोनेंट्स और वॉल्स की बात करेंगे. देन शॉर्ट वॉल्स एंड लॉन्ग वॉल्स की भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला वीडियो दिखाऊंगी, बताऊंगी. प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, प्लीज़ मुझसे पूछिए, एंड इंशाल्लाह ताला मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर सकूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़.